Dear students, I would like to present to you the concept of the multinomial distribution. Actually, it is a generalization of the binomial distribution, or you can say that the binomial distribution is a special case of the multinomial distribution. So let's try to understand it step by step. The first thing is that our random experiment is being repeated n times, and these are independent trials, you may call them, or repetitions. Now, at each repetition, the experiment can result in one out of k mutually exclusive and exhaustive outcomes. We can call them C1, C2, so on up to CK. मैं दोबारा कहती हूँ, हर दफ़ा जब आप टॉस करें, मसलन अगर आप टॉस कर रहे हैं लूडो की एक डाई को, तो आपको 6 पॉसिबल फेसेस में से कोई एक मिलेगा हर दफ़ा, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो डाई के फेसेस होते हैं, ऑब्वियसली उनमें से कोई एक अपर मोस्ट फेस पे आ जाएगा. तो हर दफ़ा फिर ये बात सही है ना कि हर मर्तबा the repetition of this experiment of tossing this die will result in 1 out of 6 in this case mutually exclusive and exhaustive outcomes. Mutually exclusive आप जानते हैं कि when two things cannot happen together. तो जाहिर है इस एग्जाम्पल में या 1 आएगा या 2 या 3, वो इकट्ठे तो नहीं आ सकते ना. और दूसरा जो लफ्ज़ मैंने कहा एग्जॉस्टिव, जाहिर है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिस विल एग्जॉस्ट द सैम्पल स्पेस. इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, लेट pi, small p with a subscript I, represent the probability that the outcome is CI. यानी वो जो k in general k possible outcomes हैं, उनमें से ith outcome के occur करने की probability को हम pi से denote कर रहे हैं. फर्स्ट आउटकम के लिए p1, सेकंड के लिए p2, kth के लिए pk and in general pi. उसके बाद एक अगली बात, let us define the random variable capital X with a subscript I to be equal to the number of outcomes that are CI. यानी कहने का मकसद ये है कि अब अगर आप मिसाल के तौर पे ये जो डाई है लूडो की, इसको अगर आप 5 दफ़ा टॉस करें तो हर दफ़ा वो 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो अब अगर x1 इस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करे कि कितनी दफ़ा C1 अकर हुआ, और C1 अगर नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर x1 का मतलब है कि हम it's the number of times we obtained a 1 in tossing that die. इसके बाद ये नोट करें कि x1 plus x2 plus so on up to xk minus 1. मैंने xk नहीं कहा, xk minus 1 कहा है. ये जो sum है, this will be generally it will be less than n, but sometimes it can also be equal to n. लेकिन जो kth है xk, that will be n minus this sum. अब ये जो मैंने कहा, इसमें इतना ज़्यादा confusion की बात नहीं है. Let me try to make it simple for you with the help of the same example. Suppose करें कि ये जो लूडो की डाई है, इसको आप 5 टाइम्स नहीं बल्कि हम ज़रा बढ़ा लेते हैं. सपोज़ कि हमने 30 टाइम्स उसको टॉस किया.
x1 represents the event कि कितनी दफ़ा 1 आया, x2 कितनी दफ़ा 2 आया, and so on up to x6. तो k फिर 6 हुआ. लेकिन अब मैं आपसे कह ये रही हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि x1 इज़ इक्वल टू 2 कि 2 दफ़ा 1 आया, and x2 इज़ इक्वल टू लेट मी से 3 के 3 दफ़ा 2 आया. इसी तरह just I'm making it up, but the point is that I want you to understand what I'm saying. इसी तरह इसके बाद x3 जो है that is equal to 4 कि 4 दफ़ा 3 आ गया, और x4 जो है that is equal to 5 कि जी 5 दफ़ा आपका 4 आ गया, और x5 जो है that is equal to 6 के जो आपका है 6 दफ़ा 5 आ गया. तो अब इन नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, how much is that? 2 plus 3 is 5, 5 plus 4 is 9, 9 plus 5 is 14, and 14 plus 6 is 20. तो चूंकि टोटल हमने 30 दफ़ा टॉस किया था, तो अब ला मुहाला वो जो आपका आखिरी पॉसिबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ 6, वो 10 दफ़ा अकर किया होगा. देखें 30 दफ़ा टॉस कर रहे हैं, उन्हीं में से कुछ ना कुछ आना है. तो अगर ये 1 जो है वो 2 दफ़ा आया, 2 जो है वो 3 दफ़ा आया, एंड सो ऑन, तो फिर वो जो आखिरी है दैट हैज़ टू अकर 10 टाइम्स. तो आपने देखा कि 10 मैंने कैसे कहा, 30 minus 20, n minus x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5. So therefore, students, it's not as difficult as you think. It's actually a simple arithmetic and also a matter of common sense. क्योंकि टोटल नंबर अगर डिफाइंड है, 6 कैटेगरीज में से 5 के नंबर्स आपने बता दिए हैं, तो छठी का ऑटोमेटिकली माइनस करके नंबर आपको मिलेगा. All right, if all this is clear, then now I'm in a position to present to you the PMF, the probability mass function of this multinomial distribution that I'm discussing with you. It goes as follows. The probability of capital X1 being equal to some particular value small x1, comma, capital X2 being equal to some particular value small x2, comma, and so on. And then the last one, capital Xk being equal to some particular value small xk. This probability is given by n factorial over x1 factorial into x2 factorial, so on, up to xk factorial. And this entire expression, which is the coefficient, maybe we can call it, is to be multiplied by p1 raised to x1 into p2 raised to x2, so on, into pk raised to xk. So this is the multinomial PMF of k minus 1 random variables, x1, x2, so on, up to xk minus 1. And they are all discrete random variables. अब आप फिर कंफ्यूज हो गए होंगे, बिकॉज आप कहेंगे कि अभी तो आप जब PMF बता रही थी तो आपने उसमें xk इक्वल टू x स्मॉल xk भी कहा था, और अब आप कह रहे हैं कि इट्स अ PMF ऑफ k माइनस 1 रैंडम वेरिएबल्स. तो स्टूडेंट्स, उसकी वजह यही है ना जो मैंने पहले बताई, कि वो जो kth है वो माइनस करके आ जाता है, सो वो अलग से नहीं है, वो उसी में से आपको मिल जाता है. इसके बाद I would like you to note that the mean for the multinomial distribution is as follows. The expected value of xi,
क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि वहाँ पे तो x1, x2 इस तरह चल रहा है. So the expected value of xi is equal to n into pi. And for the variance of xi is equal to n into pi into 1 minus pi. Does it ring a bell? कुछ आपके जहन में आया? I think कुछ लोगों के जहन में ये आ गया होगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो expected value of x is equal to np and the variance of x is equal to npq यानी n into p into 1 minus p. और मैंने अभी क्या आपको कहा, फिर से देखिए, expected value of xi is equal to npi and the variance of xi is equal to n into pi into 1 minus pi. Exactly वही फॉर्म है ना. तो इसके बाद नोट करें कि we can, for this distribution we also talk about the covariance, and the covariance of xi with xj, जिसको हम लिखते हैं COV और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर xi, xj, this covariance is equal to minus n into pi into pj, minus n pi pj, where I is unequal to j, obviously. अब देखिए उसके अंदर इतने सारे हैं तो हम उसमें से किसी एक को ith कह सकते हैं और किसी और को jth कह सकते हैं. And in this manner we can find the covariances. As I said in the beginning, the binomial distribution is a special case of the multinomial distribution. Students, what you have to do is to put k equal to 2 and then do a little bit of working, subsequent to which it will be clear to you that indeed this is the case. So this is a basic introduction to the multinomial distribution.